In this video, we are going to talk about direct and indirect speech and what are the 4 easy steps to convert any direct speech into indirect speech. First of all, if we just look at this definition, direct speech repeats the actual words of the speaker, whereas the indirect speech gives the substance of the speaker. And first of all, in direct speech, we repeat the as it is word or we quote the as it is word of the speaker. But in indirect speech, we somewhat add, or you could say the narrator or the reporter, someone somewhat adds his or her own words as well. For example, he said to me, why was he upset? He asked me why he had been upset. Now there are certain rules of converting this direct speech into indirect speech, and I'm going to explain those rules later on. Just I want to give you certain examples. First of all, this is an interrogative sentence and there are rules of converting interrogative sentence interrogative sentence of direct speech into indirect. There are rules of that, and there are 2 rules. First of all, if we have WH word, how do we convert that? And if we have auxiliary, then how do we convert that? The teacher said to the boy, sit down and do not disturb the class. The teacher ordered the boy to sit down and not to disturb the class. If you just see that this pattern and this pattern is different, what is the issue behind that? Why? Because this sentence, the sentence that is used over here is an imperative sentence, over here it is an interrogative sentence, and we also have to consider what type of sentence is used, then we make certain changes. Other than this, Krishna said, what fun to catch fish. Krishna exclaimed with wonder that it was great fun to catch the fish. Now this is an exclamatory sentence, that is why we have changed the reporting verb according to that. He said to me, would that I were happy. He wished to me. This is an optative sentence. So we have used 4 sentences over here, but there is one more sentence, that is assertive sentence, or you could say that is a declarative sentence. First of all, we need to see what are types of sentences, and after that we are going to make some changes, and those changes are mostly common in all these sentences with a little bit or with some changes as well. But in this video we are just restricting ourselves to assertive sentence, and in our upcoming videos we are going to talk about other sentences. Now let me give you a simple example. He said to me, I will be waiting for you tomorrow. Now this is an assertive sentence, or you could say declarative sentence. That is a simple sentence in which we do not have order, in which we do not have question or any negation of something. Secondly, we call this first part as reporting speech. We say that he said to me, this is reporting speech, and this part is called reported speech. Why you need to remember this? Why? Because after that we are going to talk about rules of verb, rules of pronouns, and if you do not know, for example, whether the pronoun is falling in reported speech or whether the verb is falling in reported speech, then it is really tough for you to understand. Secondly, this is reporting verb, said, and this is reported verb. So in this slide I have told you 4 things that are very important for you to remember. Reporting speech till here, reported speech, reporting verb, and reported verb. Why we need to remember reporting verb? Why I have just written reporting verb? Because we are going to change the verbs of reported speech according to the verb of reporting speech. Now what changes we have to make when we are converting any assertive sentence or any simple sentence that is in direct speech into indirect speech? First of all, we have to change pronoun. Secondly, we have to change the reporting, or we have to look at, you could say, the reporting verb as well. We have to look at it, whether it is in present tense, whether it is in past tense. Secondly, tense of the reported speech, and lastly, change of adverb. All these 4 changes are common in each and every sentence of direct speech. For example, whether the sentence is interrogative, imperative, exclamatory, optative, or negative, assertive, we are going to make certain changes, and these rules will be applied in all those speeches. First of all, what is changes of pronouns? We are going to talk about it. For pronoun,
Pronoun is a part of speech that is used at the place of noun. There are different types of pronoun, but the one that is of our concern is personal pronoun. And in order to give you glimpse or so you can understand it more easily and memorize it, I have formed a table. First of all, we have number, singular, plural. Then we have three person. As you know, in personal pronouns, we have three categories of person: first person, second person, and third person. Then we divide each case into each person into different cases: subjective, possessive, and objective. Subjective case: I, my, me; we, are, us. Second, you, your, you; your, you; he, she, it. We are going to change it into his, her, its; him, her, it; they, their, them. Now, why I have called this subjective and why I have called this objective? We have certain positions in the sentence. For example, the sentence in English, the sentence start with subject. So we are going to use I am playing. He said, I am playing cricket. He said, they said, they said we like to eat biryani. He said, what are you doing? So we at the subjective position we are using these pronouns, but at the objective position, for example, he said I met him. Now if you just see, I have used objective case at the position of object in the sentence. Now moving on to changes. Change all first person pronouns I and we of the reported speech into the corresponding form of the subject of the reporting verb. We need to change the first person pronouns according to the corresponding form that is present in the subject of the reporting verb. You need to remember this rule. Means कि हम लोगों को अपने जितने भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होंगे उन्हें हम चेंज करेंगे जो आपके पास सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब का. जैसे एग्जांपल देता हूँ. He said I am not feeling well. He, this is third person pronoun, said I am not feeling well. अब यहाँ पे हमने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देख लिया जी कौन सा प्रोनाउन चेंज यूज हुआ है. वी गॉट टू नो दैट फर्स्ट पर्सन यूज हुआ, तो वी आर गोइंग टू चेंज दिस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इनटू द थर्ड पर्सन प्रोनाउन आर इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग. ही टोल्ड दैट ही वाज नॉट फीलिंग वेल. बाकी अभी आप छोड़ दें जी हम यहाँ पे डैट का इस्तेमाल कर रहे हैं या वर्ब क्यों लग रहा है, उसके ऊपर हम बाद में वर्ब के ऊपर रूल्स पे पहले बाद में बात होगी. पहले यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रोनाउन कैसे यूज होगा. जब भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसे वी आ गया तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो हम इसको रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन या सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे. होप सो इट इज क्लियर. ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन के साथ नहीं, सब्जेक्ट के प्रोनाउन के साथ हम इसे चेंज कर देंगे. सेकेंड रूल. आफ्टर दिस व्हेन वी आर डीलिंग विद असर्टिव सेंटेंस, जब भी आपके पास कोई असर्टिव सेंटेंस होता है तो उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में तो हम इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करते हैं हम, और साथ ही आप कॉमा भी ख़त्म करेंगे. एंड एट दैट प्लेस वी आर गोइंग टू यूज दैट. ये सिर्फ असर्टिव सेंटेंस के लिए रूल है. बाकी जो चार रूल है वो एप्लीकेबल सेम होंगे हर सेंटेंस के लिए, लेकिन ये दैट वाला रूल यहाँ पे अभी सिर्फ हम असर्टिव में अप्लाई कर रहे हैं. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच के साथ चेंज करते हैं. जैसे ही सेड टू मी, अब यहाँ हमने रिपोर्टेड स्पीच में गए और हमने वहां पे देखा जी दैट वी हैव यूज्ड सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, तो हम उस सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को किसके साथ चेंज करते हैं जी, हम उसके ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं. ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी दैट आई. Why I have used sorry I instead of me? Because we have to use the subjective case, because we have to use subjective case at the position of subject. Me would be considered wrong. You, तो यहाँ पे you जो है आपके पास किस में चेंज हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे you आपका चेंज होगा, us की जगह यहाँ आ जाएगा we were good writers. We said to her your English her, so we are going to switch with this one. आई थिंक सो. पहला फर्स्ट पर्सन हमने चेंज किसके साथ किया था जी, इसके साथ. आपका जो सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग स्पीच का, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमने ऑब्जेक्ट के साथ चेंज. थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन एज इट इज रहेगा रिपोर्टेड स्पीच का और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. शी आई सेड शी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो अब देखें हमने कोई चेंज नहीं किया. दे एज इट इज यूज, एज इट इज यूज. सो अब चेंजेस ऑफ प्रोनाउंस आपको क्लियर हो जानी चाहिए. फर्स्ट पर्सन हम किसके साथ चेंज करेंगे, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. आपके पास जो है सेकंड पर्सन आप किसके साथ चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. और जो आपके पास एंड पे आ गया थर्ड पर्सन वो एज इट इज रहेगा.
अब हम बात करते हैं चेंजेस ऑफ वर्ब्स के बारे में। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस, जब अगर यहाँ आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये मैंने कहा था रिपोर्टिंग स्पीच और अगली रिपोर्टेड, अगर वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा तो आपका टेंस रिपोर्टेड स्पीच का चेंज नहीं होगा। प्रोनाउंस की बात होगी, अब वर्ब की बात कर रहे हैं, वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे he says she is very intelligent. He says that she is very intelligent as it is used. Scientists say Earth revolves around the sun. Same. I will say I do not want to meet him. I will say that he does not want to meet him. वो उसी तरह यूज होगा। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में रिपोर्टेड स्पीच यूज होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रेजेंट और फ्यूचर आएगा तो यहाँ का वर्ब जो होगा वो एज इट इज रहेगा। अब आगे चलते हैं। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, अगर ये वाला वर्ब आपका पास्ट टेंस में होगा फिर हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, और वो चेंजेस आपको याद कर ली जाएं तो काफी बेहतर होगा। प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज हो जाएगा जी? पास्ट सिंपल में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब ये एग्जांपल देखें। ही सेड आई वर्क हार्ड, ही सेड दैट ही वर्कड हार्ड, ही सेड आई एम वर्किंग हार्ड सॉरी, he said I am working hard, present continuous tense तो हमने उसे किस में चेंज कर दिया जी? past continuous tense में। he said I have worked hard, he said that he had worked hard, past perfect में। he said I have been studying since noon, that he had been studying since noon। moving on, पास्ट सिंपल फिर आपका किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट एज इट इज रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि आगे टेंस ही नहीं बनता। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी वो भी एज इट इज रहेगा। ये आपने दो याद रखने हैं क्योंकि ये एज इट इज रहेंगे। लेकिन पास्ट सिंपल कैसे जी पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ? ही सेड आई वर्कड हार्ड, ये आपका पास्ट सिंपल, वाई बिकॉज वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और यहाँ पे आपके पास हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल हुआ और साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी, और यहाँ पे हैड बीन का इस्तेमाल हुआ जो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं, लेकिन आगे टेंस चेंज नहीं हुआ। लेकिन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस और देयर इज सम जनरल और यूनिवर्सल, अगर आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब ख्वाह पास्ट टेंस में हो लेकिन आगे हम कोई जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें तब हम उसे चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगा। जैसे अगर हम कह दें जी ही सेड वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अब यहाँ पे हमने एक यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की तो यहाँ पे हम उसको बिल्कुल चेंज, जो उसका वर्ब है वो एज इट इज रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। लास्टली जो आपके पास आ जाता है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगेन पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड वर्ब अगर आपके पास फ्यूचर टेंस में हो, देन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द पास्ट फॉर्म। जैसे शैल, आई शैल बी इन इंडिया टुमारो, तो आई शुड बी यार ही के साथ आप कर देंगे जी ही वुड बी इन इंडिया टुमारो। और यहाँ पे भी देखें मैंने ये चेंज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एक आपको पता है इसका एक लेदर रूल है जो एडवर्ब का रूल है, उसके मुताबिक हम मैं उसके मुताबिक फिर इसे चेंज करूंगा, दैट इज द नेक्स्ट डे। आपको पता है यहाँ पे द नेक्स्ट डे आएगा। अदर देन दिस शेल हैव को हम किस में कर देंगे जी? शुड हैव और वुड हैव, मे को हम माइट हैव, कैन को हम कुड में। सो वर्ब्स के रूल हमने क्या बात की जी? वर्ब्स में अगर हमारे पास प्रेजेंट और फ्यूचर होगा रिपोर्टिंग वर्ब में तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगा, वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में होगा और आगे अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। और अगर फ्यूचर टेंस में हो तो देन वी आर गोइंग टू मेक सर्टेन चेंजेस। प्रेजेंट और पास्ट के लिहाज से हमने पिछली स्लाइड में बात की। अब आ जाते हैं जी चेंज ऑफ एडवर्ब्स पे। There are certain adverbs that you need to memorize, आप उनको as it is memorize कर लें। Why? Because we are taking the speaker away from something. Why? Because we have used past tense, तो इसलिए हम today की जगह that day, yesterday की जगह the previous day or the day before हम इस तरह के indirect speech में adverbs और जो कुछ से adverbial phrases का, फिर ये तो phrase group of words आ रहे हैं तो हम उन adverbial phrases को इस्तेमाल करते हैं। After that अब हमने 3 या 4 बेसिक चीज़ों पे बात की। पहली चीज़ जो आपके पास आ गई वो दैट वाज प्रोनाउन, सेकेंडली रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब, थर्डली रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब, लास्टली एडवर्ब्स आ गए आपके पास। एंड अदर देन दैट हमने बात की यूज ऑफ दैट एज वेल। लेकिन ये सब चेंजेस आपकी यूज होंगी सब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, लेकिन जो दैट है हमने उसे कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका असर्टिव सेंटेंस में यूज होगा। आई थिंक यू नाउ you would be able to apply these rules, and if you have any question or query you can type in the comment box, but for that you have to like and subscribe our channel. Thank you so much.